Hi, welcome to my English. We will be covering the 2021 question paper of NIOS 302. So, इस question paper में I will be explaining you कैसे करना है. Secondly, I would also be providing you with the answer. So, ये general instructions आ गए हैं. And now we move on. This is set A. Question paper जो है आपका दो sets में divided होगा, section A and section B. दोनों section आपको compulsory हैं. सेक्शन ए जो है वो सारा ही कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट सेक्शन बी में है दो ऑप्शंस. एक है ऑप्शन 1, एक है ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 इज ईएसपी रिसेप्शनिस्ट एंड ऑप्शन 2 इज ईएसपी ऑफिस यूज. आप चूज कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम वन ऑप्शन. ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस आपने ऑप्शन 1 में से कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपने ऑप्शन 2 में से कर लिए. सो प्लीज फॉलो ओनली वन ऑप्शन प्रॉपरली. Now let's begin with section A. Section A हमारा सारा literature, सारा grammar, सारा writing के ऊपर based है. And section B as I have already told you. So let's begin. Section 1 में question number 1. Choice का question है, reference to context है. एक passage दिया हुआ है and we can see that this passage is from the lesson of Ved Mehta. अब देखो answer कैसे करना है. What did the speaker miss when he lost his sight? स्पीकर ने क्या मिस किया? द स्पीकर, अब क्योंकि डिड है तो इसलिए आप मिस को कर दोगे मिस्ड. सो द आंसर विल बी द स्पीकर मिस्ड द फॉन्ड एंड वार्म मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड फिल्ड विद कलर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट. सो ये बाद में आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलनेस डज द स्पीकर वाज सफरिंग फ्रॉम? सो you will write the speaker was suffering from meningitis, जो कि एक प्रोलॉन्ग सिकनेस है. यू कैन ऑल्सो से दैट इट वॉज अ प्रोलॉन्ग सिकनेस विच लेड टू ब्लाइंडनेस. अगर आप मेनिंजाइटिस भी लिखोगे और प्रोलॉन्ग सिकनेस ब्रैकेट में मेनिंजाइटिस भी लिखेंगे तब भी इट्स गोइंग टू फेच यू 1 मार्क, बिकॉज 1 मार्क का ही क्वेश्चन है. ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडनेस का ऑप्शन पॉइंट लिखो. थर्ड क्वेश्चन है, 4 सेंसेस उसने कौन से मेंशन किए? ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्लाइंड था तो 4 सेंसेस में से सी वाला नहीं आएगा. बाकी 4 सेंसेस होते हैं हियर, feel, smell and touch. Okay, now almost always invariably भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी vocabulary अच्छी होनी चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो invariably is almost always, frequently, usually. Okay, next question है चॉइस का क्वेश्चन और ये है बलदेव वाले लेसन में से. द टाइगर इज इन द टनल वाले लेसन में से. ओके, नाउ क्वेश्चन 1 इज व्हाई वाज बलदेव अवेक? बलदेव यहाँ पहली लाइन एक अवेक था, लेकिन क्यों अवेक था? बिकॉज ही वर्कड एज अ वॉचमैन एट नाइट. ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट ही वर्कड एज अ वॉचमैन एट अ स्टेशन. ओके, नेक्स्ट, हाउ वाज द वेदर एट नाइट? वेदर कैसा था रात में? चिल एयर है, ठीक है. तो यू कैन से द वेदर एट नाइट वाज कोल्ड एंड चिली, ठीक है. Okay, now where did the train slow down? Trains कहाँ पर slow होती थी? अब यहाँ पर slow down आपका keyword है. Most trains merely slow down before taking a sharp curve. लेकिन where नहीं बता रहा है ये आंसर. So don't copy it blindly. And the answer is right before this line, and it is train slowed down at the deep cutting that led to the tunnel. Deep cutting जो कि tunnel को lead करती थी, that was where the train used to slow down. Extended his hands and legs, वो stretch हुआ था. So stretched is the answer for this question. Now moving on to question number 2. ये भी एक reference to context है and this is I must know the truth. आराधना वाला lesson है. ये भी 4 नंबर का है. पहला question, why did the speaker hug her? Speaker थी उसकी बहन, right? सिमी. द स्पीकर, अब क्योंकि डिड है अगेन तो आप हग को हग्ड कर देंगे. द स्पीकर हग्ड हर टू विश हर द बेस्ट बिफोर हर परफॉर्मेंस. उसकी कोई परफॉर्मेंस थी, उससे पहले वो उसे विश करने आई थी, दोबारा से उसको मोरल बूस्ट करने के लिए आई थी. वॉट हैपन टू द फ्लावर्स ऑन द हेयर? अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव क्रश्ड द फ्लावर्स, राइट? सो द फ्लावर्स ऑन द हेयर गॉट क्रश्ड व्हेन द स्पीकर हग्ड हर, राइट? Okay, now why did speaker's sister stare at the mirror? स्पीकर की जो सिस्टर थी यानी कि आराधना, उसने मिरर की तरफ क्यों देखा? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बदसूरत समझती थी बिकॉज वो काली थी. सो शी ऑलवेज फेल्ट, सो यू विल राइट द स्पीकर सिस्टर स्टेयर्ड. अगेन डिड है तो डी लगा दोगे, एट द मिरर
as she always felt she was not beautiful. When the speaker sister told her the same, she looked in the mirror only to find she was not fair. वो काली थी इसलिए वो अपने आप को बदसूरत समझ. स्क्रब्ड और स्मूथ का मतलब है ब्रश डाउन. उसने अपनी सिल्क ड्रेस को स्मूथ करा, उसकी प्लेट्स ठीक करी, ब्रश डाउन किया. ठीक है. और है चॉइस वाला क्वेश्चन है और ये है इंडिया हर पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर में से. पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर? ये स्पीकर इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो यूल राइट द स्पीकर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर लुक एट इंडिया विद अ पिक्चर ऑफ होप एंड एंग्विश? होप और एंग्विश, यहाँ पर होप है और एंग्विश है. होप किस लिए है कि इंडियंस अपना जो रीति रिवाज हैं वो तोड़ देंगे, जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, और एंग्विश उन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर ही है. तो एक उम्मीद भी है और एक गुस्सा भी है. So you will write the speaker. अब क्योंकि does है, it's present tense, so you will write looks at India with a picture of hope and anguish because he has mixed feelings of being angry at the conflicts among Indians, but is hopeful at the same time that Indians will rise above these. Okay. Next, what does the speaker find most remarkable about India and Indians? India और Indians के बारे में स्पीकर को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा remarkable लगती है? और वो ये कि जो लोग डीप रूटेड थे, जिनके पास्ट से क्लिंग करके रखते थे, अब वो मार्च फॉरवर्ड कर रहे हैं. मतलब अब वो डिटर्मिन्ड है कि हम अपने आप को चेंज करेंगे. सो यू विल से द मोस्ट रिमार्केबल अबाउट इंडिया एंड इंडियंस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज द फैक्ट दैट द पीपल हु रिफ्यूज टू चेंज इन द पास्ट आर नाउ मार्चिंग फॉरवर्ड विद स्पीड एंड डिटर्मिनेशन. रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूट स्टेप्स मतलब डिटर्मिन्ड स्टेप्स, और स्पीड मतलब रैपिडली. ठीक है. ओके, टू बी डिटर्मिन्ड अगेन दिस इज रेजोल्यूट. तो दिस इज द चॉइस नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. ठीक है, 8 मार्क्स हो गए. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आप थोड़ा सा लेसन के बारे में भूमिका भी बता सकते हो. ठीक है. दिस लेसन और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर लेसन अ केस ऑफ सस्पिशन. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप अपने वर्ड लिमिट बढ़ानी है आपको. 6 नंबर का क्वेश्चन, आप छोटा सा तो लिखेंगे नहीं, है ना. क्वेश्चन क्या है? डिड द डॉक्टर फाइंड हिज वॉच? आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, डॉक्टर को अपनी वॉच नहीं मिली. whom did he suspect? उसने किसको सस्पेक्ट किया? उसने एवेंस को सस्पेक्ट किया. अब क्यों किया? इसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो. आप बता सकते हो डॉक्टर बेंसन अपनी वॉच लेकर ही नहीं आए थे, बट जब एवेंस ने उनकी पॉकेट में हाथ डाला तो उन्हें लगा कि इसने मेरी पॉकेट में से वॉच चुरा ली है, जब वो सिगरेट्स के पैकेट को वापस रख रहा था. इसलिए उसका जो सारा सस्पेशन था एवेंस के ऊपर ही फेल हुआ. राइट. सो ही सस्पेक्टेड एवेंस हैड स्टोलन इट. डॉक्टर बेंसन थॉट दैट ही कैरीड हिज वॉच which may have been taken out by Evans, who had put his hand in his pocket to put back the cigarettes. You can break the sentences in order to make more sense. It doesn't have to be very difficult, complex sentence while writing. Okay. Now next question. Now again you can see this is a choice question. जिस क्वेश्चन में you're more comfortable, prepare that lesson. This is an important lesson, तो prepare ज़रूर करना इसको. ओके, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इफ यू हैड बीन इन आराधना's प्लेस? आप कैसा फील करते हैं आराधना की प्लेस में? 2 तरह से आपको बताना है इसमें. 2 बातें. पहला, आपको गुस्सा आता बिल्कुल, क्योंकि जिस फैमिली के साथ वो रह रही है 18 साल से, तब उसे अचानक पता चलता है दैट शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं. तो डेफिनेटली शी वुड हैव फेल्ट शैटर्ड. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर सीइंग द लव ऑफ हर मदर एंड द पेरेंट्स, कि उन्होंने उसको इतनी अच्छी गोल्ड की चेन ला कर दी, she would feel that even if they are not my biological parents, she would still love them, because I would still love them if I had been in her place because of the love that they had showered. तो दोनों बातें आपको बतानी है, since it is a 6 mark का question. ठीक है. तो पहली बात कि मैं बहुत डिस्टर्ब होती, बहुत एंग्री होती, शैटर हो जाती. लेकिन दूसरी बात, I would also realize that my parents love me so much despite the fact that I am not their biological child. ठीक है. Okay, now let's move to question number 3. Question number 3 is like a choice question. You are given 4 questions. You have to attempt any 3 out of the 4. ठीक है, but I have written all the 4, so we can take a look. What irritated the doctor about the man? The man really irritated the doctor by his impolite behavior. First of all, it was impudent and impolite to take out 2 cigarettes from the packet. It was a courteous offer and he should have the courtesy to take only 1 cigarette instead of taking 2. Secondly,
he dared to touch the doctor's pocket to put the pack of cigarettes back in the doctor's pocket. This irritated the doctor. दो बातें थी. पहली बात तो एक ऑफर किया तो 2 सिगरेट्स ले ली. दूसरी बात कि उसका सिगरेट का जो पैकेट था खुद ही उसकी पॉकेट में डाल रहा था. इस वजह से डॉक्टर इरिटेट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, गावस्कर ने अपनी मदर की नोज कैसे ब्रेक करी. Okay, so while playing cricket in the gallery of their house, Gavaskar's ball hit his mother's nose when he hit a straight shot. Again, you can break the sentence into different small sentences and write your answer in your own word. Doesn't have to be a memorized answer. Third, what kind of life did the writer's grandfather lead when he was a small boy? What was considered important those days? उन्होंने कैसी लाइफ जी? It was a carefree life and a beautiful childhood. ठीक है. इन दोज डेज लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग सारे ही कीवर्ड हैं और ये सारे आपको लिखने ज़रूरी हैं. लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग वाज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. वेरी सिंपल एंड ईजी आंसर बाय द वे. ये भी बहुत सिंपल है. वॉट वेपन डिड बलदेव कैरी? हु हैड मेड इट? बलदेव कैरीड अ स्मॉल एक्स, हिज फादर हैड मेड इट. तो ये वाले जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप. आपने अगर स्मॉल एक्स लिख दिया आपको 1 नंबर मिल जाएगा. बट येस, ट्राई टू राइट इन फुल सेंटेंस, अदरवाइज आपको 2 की जगह आधा ही नंबर मिलेगा. अब आते हैं पोएम के ऊपर एंड दैट अगेन विल हैव अ चॉइस. फर्स्ट पोएम जो है वो है लेजर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वुड्स वी पास? व्हेन वुड्स वी पास मीन्स व्हेन वी पास थ्रू द फॉरेस्ट. वुड्स मतलब फॉरेस्ट और पास मतलब गुजरते हैं, सो पास थ्रू. ओके. व्हाट कैन वन सी व्हाइल पासिंग थ्रू द वुड्स? वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर nuts in the grass. So while passing through the woods, comma, one can see the squirrels hiding nuts in the grass. How does the smile spread? Smile कैसे spread होती है? तो ended that smile, her eyes began. तो eyes में begin हुई और फिर वो mouth तक पहुंची. So the enriching smile on the face of the beauty spread from her eyes to lips. Very simple. Again, now और क्वेश्चन है द रोड नॉट टेकन जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है. लेट्स टेक अ लुक. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस? दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस नरेटर ने क्यों बोला? द नरेटर से को आप कर दोगे सेड. बाय दीज वर्ड्स ही मीन्स टू से दैट हिज चॉइस ऑफ प्रोफेशन हैज चेंज्ड हिज लाइफ टोटली. दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. तो उसकी जो चॉइस थी उसने सारा ही डिफरेंस कर दिया. What did the poet wish to do when he takes the other road? तो जो रोड पोएट नहीं ले पाया उसके बारे में वो क्या सोचता है? ऑब्वियसली वो सॉरी फील करता है. वो चाहता था कि काश मैं दोनों ही रोड्स पर ट्रैवल कर लेता. So the poet wished to take the other road. He feels sorry that he could not travel both the roads. He had to make a difficult choice. मेन थीम क्या है पोएम की? मेन थीम है कि life is full of choices which define our destinies. The speaker spends a while deliberating when he comes to a fork in the road, which symbolizes a choice he must make in his life. Question number 5. It is an unseen passage, so I'm not going to be discussing very much into it, but I will tell you how to solve it. तो पहला question, how has cosmetic surgery made people look younger? इसमें आपको क्या करना है? Keywords find करने हैं. Cosmetic surgery ढूंढो और younger. Okay, by the way, all the questions are in chronological order. Okay, so the answer to it is cosmetic surgery has made. आप ये लिख सकते हो cosmetic surgery has made people look younger. And first of all, it removes wrinkles. Sagged skin may be tightened by means of facelift. And hairdresser may dye gray hair. तो इससे 3 बातें हैं. So 2 नंबर का क्वेश्चन है. You should write all the points. ठीक है. सेकेंड थिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स डू दीज ओल्ड पीपल फेस व्हेन दे ग्रो ओल्डर? ओल्ड पीपल कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? तो देख रहे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और आपको पता है प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं. तो वर्स्ट पार्ट मतलब बुरा पार्ट. और you can also say the worst part of aging is that mind becomes less alert, you can say, and they experience short-term memory. Later, some may suffer from dementia, other often in the form of Alzheimer's disease. So these are the problems that you can mention. Or you can also say that they may even have to move to old age homes to be taken care of. तो ये सारी problems हैं. 2 नंबर का question again. What is meant by grey power? So grey power का
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट स्टिल द ग्रे पावर जो है, जिन लोगों के बाल ग्रे हो जाते हैं, इज़ टू ओनली ट्रीट द एल्डरली विद ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, अब आ जाओ वर्ड्स पर. इफ़ यू आर लकी यू विल बी एबल टू गेट इट, अदरवाइज आई कैंट रियली प्रॉमिस. इस क्वेश्चन को, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन को करने के लिए रीड मोर इन ऑर्डर टू हैव मोर वोकैबुलरी इन योर वोकैब बैंक. लिबरल का मतलब है जेनरस एंड वेल्दी का मतलब है वेल ऑफ. नाउ नेक्स्ट पैसेज अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन है, एंड लाइक आई सेड इट इज़ गोइंग टू बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आपको 1 2 3 4 ऐसे करके आंसर्स मिलेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, what happens when you sneeze? Very easy and very easy to find out also. When you sneeze, your body is trying to get rid of bad things in your nose such as bacteria. How does the tiny hair work? अब tiny hair ढूंढ लो इसमें. So these hair, tiny hair. So you will write the tiny hair filter the air you breathe. Sometimes dust and pollen find their way through these hair and bother the nasal passages. Okay. Which parts of your body work together when you sneeze? So your brains, lungs, nose, mouth and muscles and the of the upper body work together to blow away the invaders with a sneeze. Okay. How does the germs get blown out of your nose? Why should you use a tissue paper? तो ये सारा इसी में से ही आपको देखकर लिखना है, when you sneeze or all that. So just write it, copy paste कर सकते हो. Okay, moving forward. अगेन ये भी एक अनसीन पैसेज है, बट फेयरली सिंपल वन. ये कंप्लीशन वाला है. तो च्योर ट्री को क्या कहा जाता है? कॉल्ड को हम बोलते हैं नोन एज. तो ये सिनोनिम्स भी होते हैं उसमें, है ना, तो याद रखना कॉल्ड, नोन एज, यू शुड नो सिनोनिम्स. ओके, फुलवारा कहा जाता है उसे. इट प्रोड्यूसेस. अब देखो कितनी दूर है प्रोड्यूसेस, थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना. और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ कॉल्ड द इंडियन बटर ट्री. So I think Indian butter tree is the right answer. You should write. Okay, oil seeds, extracted juice. Extracted juice to make jaggery. हाँ, इसमें I think Indian butter tree is the right answer because it produces oil seeds. तो oil और butter जो है वो linked है. तो फुलवारा नहीं होगा. That is the wrong answer. Okay. Now summary. Summary में आप एक बार first para पढ़ो शुरू का, एक बार last पढ़ो, कोई important हो तो आप उसमें से हाईलाइट कर दो. मैंने हाईलाइट किया हुआ है. जब आता है ऐसा, बट, ऑल ऑफ दीज, इस टाइप की चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली, ये थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज होते हैं, वो हमें नहीं नोट करने. सो वाटर इज नॉट ओनली अ कमोडिटी, ये सब मत लिखो. वाटर इंक्लूड्स या हैज़, यू कैन से हैज़ social, cultural, environmental and economic values. They must be considered to realize the goals of integrated water resources management. The value of water embedded also needs recognition. Directly or indirectly, no, don't include all that, है ना? Okay. Now, water crisis. Second part of the story is the water crisis. You can also include this sentence because this looks important. World over this concept of virtual water influences production and trade policies. ठीक है? Then water crisis in many countries is a governance problem. Largely हटा दो. National responses to water-related disaster shortages allocation till civil society, integrated approaches required to solve this problem. That's all. Grammar. Appropriate form of the verb. Understand हमेशा इसमें past tense नहीं आता. अगर आपने सब में past tense लगाया, आप देख सकते हो चारों नंबर कट. क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, ठीक है? Tomorrow. So tomorrow है, so it has to be will go. Tomorrow I will go for an entrance test at DPH school. If I clear that test, अगर मैं clear करता हूँ, तो करता हूँ is clear, right? I will get a job. It is a conditional. There, अब इन्होंने लिखा ही ठीक से नहीं है. There will be so many candidates. I am working hard. Let's see what happens. देखो क्या होता है. So it is a combination of present simple and future simple. Okay. Next question is, it's a passive form. So should not be used, should not be choked, should not be killed. So again, read it to understand it. इन्होंने should not लिखा हुआ ही नहीं था, so I had to read to write the answer. So please pay attention. Next question is of the connectors. Which use करना है? This is the road. It leads to the railway station. So this is the road which leads to the railway station. It काट देंगे. He is the player. The committee selected him, the captain. So he is the player
whom the company selected as the captain. Okay, we met a girl, who से कनेक्ट करना है, she lost her way, तो who से इसको रिप्लेस कर देंगे, we met a girl who lost her way. Mr. Narayan doesn't like publicity. Mr. Narayan's books are bestsellers. अब whose है, तो whose है, who होता तो हम who doesn't like publicity ये कर देते, लेकिन यहाँ पर whose है तो हमें ये वाला सेंटेंस पहले लिखना पड़ेगा. So Mr. Narayan, whose books are bestsellers, doesn't like publicity. Okay. Next is direct indirect है. Very simple it is. इसमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से सेंटेंस की बात हो रही है, तो हमने देखा कि ये दो सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है. सैयदा told her mother that she dash English tutor. So could का can होता तो could कर देते, could not call my की जगह her करना है. And replied that her phone ये रहा, is not reachable, इसको was करना है. Simple, very simple, 2 नंबर. Now this is paragraph writing. I haven't written it and I have not done it deliberately. 100 words में आप कैसे expand करोगे अपने ideas को? हर question को आप WH question से expand करो, brainstorm करो, ठीक है? हर question का WH answer दो. What? Exercise क्या है? Exercise is a form of और इट बूस्ट, वो क्या करती है ये बता दो. एक्सरसाइज हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड हेल्थ और इट लीड्स टू गुड हेल्थ. इट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी. नॉट ओनली न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट बट एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कब करनी चाहिए? वी शुड डू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. What forms of exercise you can do? You can do cardio exercise, you can go for a walk, you can do some bungee jumping. No, not bungee jumping, sorry. You can do some aerobics, you can do some Zumba dance. So different forms of exercise. Where should you do? You can do it in your house, outside your house. Then who should do it? People of all ages should do it. And it is important for the people in their middle ages also. Okay, why should you do it? Uske health benefits, it keeps your body fit, blood circulation, and your heart healthy, your body healthy, it keeps you fit. And how you should do it? Different forms of exercise. कितने सारे points आपको मिल गए एक point से. So always brainstorm yourself before coming to write a paragraph. Okay. Girl education makes family grow better. Girl education क्या है? बॉयज़ एजुकेशन से क्यों ज़रूरी है? फैमिली ग्रो करती है क्योंकि बॉय अपनी फैमिली में रहता है, गर्ल गोज टू अ डिफरेंट फैमिली. टिल व्हाट लेवल गर्ल्स शुड स्टडी, क्या क्या उनके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे फैमिली को हेल्प करती है अपने बच्चों को पढ़ाकर एक एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बना सकती है अपनी फैमिली के लिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. एंड इट कैन शी कैन ऑल्सो इंस्टिल वैल्यूज़. सो डेफिनेटली शी इज़ बेसिकली आप इसके रीजंस डाल रहे हो कि गर्ल को क्यों एजुकेट करना चाहिए. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. ओके, विलेजेस आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. ओके, पोल्यूशन बता दो. 2 तरह की जगहों में होता है. बिकॉज कम टू द पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट राइटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. तो कम टू द पॉइंट के रूरल एरियाज में होता है, अर्बन एरियाज में होता है. विलेजेस को हम रूरल एरियाज कहते हैं, राइट. अर्बन एरियाज में किस किस चीज़ से होता है, विलेजेस में किस किस चीज़ से पोल्यूशन के इफेक्ट्स को हम काउंटर कर सकते हैं. क्योंकि विलेजेस आर मोर ग्रीन, दे हैव फार्म्स, दे हैव मोर ट्री कवर. तो उससे जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं जो कंट्री साइड पर होते हैं, देयर इफेक्ट्स कैन बी काउंटर्ड एंड दस द विलेजेस आर यूजुअली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. ठीक है, so this is how you will be elaborating. Now let's come to the letter. It is a formal letter that you will be writing to the collector of your district to provide more drinking water facility in your district. Give your suggestions. You are Ajit Kumar, 12A Model Town, Agra. सबसे पहले you will write the sender's address which is 12A Model Town. नीचे लिखोगे आगरा, डेट डालोगे एग्जाम की डेट. रिसीवर्स एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? द कलेक्टर. And maybe you can write municipal corporation, Agra. That is how you have written the first 3 things. BP is body paragraph. 3 body paragraphs होने चाहिए. उससे पहले आपको लिखना है subject. Subject में आप लिखेंगे more drinking water facilities in the model town area. फिर आप लिखेंगे dear sir. अब आप problem state करेंगे. I am writing this letter to draw your attention to provide more drinking water facility in our area model town in the state of Agra.
Then you will state the problem. Then you will explain the problem in the body para 2. बॉडी पैरा 2 में कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं, बहुत सारे लेबरर्स होते हैं जो कि पानी की कमी की वजह से प्यासे रह जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द समर सीजन कमिंग अप लॉट ऑफ पीपल हैव इवन फेंटेड. और जब बच्चे खेल कर आ रहे होते हैं तो उन्हें ड्रिंकिंग फैसिलिटी चाहिए. समटाइम्स बच्चे ख़राब पानी पी कर बीमार पड़ जाते हैं. सो हियर यू आर एक्चुअली नोटिंग डाउन द प्रॉब्लम, बट जस्ट नोट डाउन मत करो, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो प्रॉब्लम्स को. ठीक है, ओके. नाउ गिव सजेशन. आप बता सकते हो कि एक तो आप वाटर पार्क के बाहर पार्क के बाहर एक वाटर कूलर लगवा सकते हैं या एक मेन मार्केट में लगवा सकते हैं. हियर यू आर मेनली गिविंग सजेशन ऑन वेयर टू प्लेस द water facility, drinking water facility. And finally you will write yours faithfully, and then you'll write your name, which is Ajit Kumar. That's how you'll write 5 marks per. Note making. Note making जो है, again it depends on what type of passage you have got, so I'm not going to go deep into this, but as I was reading through this paragraph I found that there are a lot of dates in it. So मैंने इसको डेट के हिसाब से नोट मेकिंग कर दिया. 1919 आप हेडिंग बना दो, इसकी हेडिंग बना दो डॉक्टर सारा भाई, लाइफ ऑफ डॉक्टर सारा भाई. ठीक है, अब बॉर्न या बर्थ August 12, 1919, कॉमा लगाओ अहमदाबाद, कॉमा लगाओ रिच इंडस्ट्रियल फैमिली. अर्ली एजुकेशन कोलन लगाओ, so you are using some abbreviation, some punctuation marks as well. Private school Ahmedabad, Gujarat. फिर further education Cambridge, England. 1939 Tripos St John's College. 1945 फिर बीच में research work. 1945 went back to Cambridge. 1947 PhD degree को later explain कर देना that it is a recognizable abbreviation, Doctor of Philosophy. 1942 got married to Srimati Mrinal. 1947 finding or looking for a place for the project, got rooms at MG Science Institute. Then 1948 start the laboratory and KK Ramanathan first director. ठीक है, 1952 foundation stone of the new laboratory. Then formally 1954 laboratory formally opened. For 15 years pharmaceutical company. First institution कोलन लगाकर ATIRA Ahmedabad Textile Industries Research Association. Then 1949 to 65 honorary director of ATIRA. 1962 Indian Institute of Management, founded the Indian Institute of Management, IIM Ahmedabad. So IIM कर दो because it's a recognizable abbreviation. 1962-65 ऑनोरेरी को भी आप शॉर्ट कर सकते हो, OHON कर दो एंड नीचे एक्सप्लेन कर दो. ऑनोरेरी का ये होता है, डायरेक्टर को डेयर कर सकते हो, DIR. ठीक है. 1966 डेथ ऑफ डॉक्टर बाबा, अगेन डॉक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो. तो सारी चीज़ें आप फुलफिल कर रहे हो. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पंक्चुएशन और इनएक्यूरेसीज हैं. ओके, फर्स्ट हैज़ बीन डन. So this is the sun, the moon and all these objects. कॉमा लग सकता है वैसे यहाँ पर. Shining in the night sky is called, नहीं are called. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of, नहीं आएगा, of आएगा, gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Okay. Then moving on to the last section, which is section B, we have to attempt one of the two options and attempt all questions from one option. Okay, so option 1 I'm going to start off. आपको रिक्वेस्ट लिखनी है, तो बेसिकली आपको इन सेंटेंसेस को ही रिक्वेस्ट के फॉर्म में फ्रेम करना है. सम टाइम बैक आई हैड अ स्टूडेंट आस्किंग मी दैट दिस कुड बी रॉन्ग. नो, बट you just have to write it like a request. So they will stay in a hotel near the fort. Could you book a hotel near the fort, please? The man at the reception counter will help you. Please ask the man at the reception counter. He would be able to help you. Good morning, I need a room. Good morning, could you please help me get a room? So make it more polite. That's a request, right?
The tariff is 900 rupees a day. Sir, ma'am, the tariff is 900 rupees for a day. Nothing much to change in this, so I've just left it like it. Just added the sir or ma'am. Now next question. How does the receptionist work like a telephone operator? So आप explain करोगे 2 mark का question है. A receptionist acts as a link between her organization and the rest of the world. When she is sitting at the telephone or near the telephone, she receives the messages, notes them down in the message form, delivers them to the concerned department or to the concerned people. Thus, she works like a telephone operator. Okay, so I've just written the main points. You have to elaborate it on your own. Next question. Why should the receptionist know about the brochure? Receptionist should know about the brochure because the information about the organization is included in the brochure, and when the brochure is with her, it becomes easy to deliver or pass the information through the brochure. Thus, it is helpful for a receptionist to know about the brochure. इसको closing कर देना आंसर की ताकि आपका big भी लगे and it looks meaningful also. Now, how will you repeat? Use a stroke before every pause. तो जहाँ पर double है, repeated a number, उसको आप double लिख देंगे, and wherever it is single तो आप बीच में stroke लगा देंगे. तो लिखोगे कैसे इसको? You will write it like this. You will write double 3, then put a stroke, then 2, 6, stroke, 2, 6, 2, 1, again put a stroke, and finally double 4. So this is how you're going to write it. Now next is double 9, 2, 4, 5, 2, 5, 2, 4, 5. So again just put a stroke after every 2 numbers, just write them down like this, and जहाँ भी double है उसको double. Now write notes on the following. Message form क्या होता है, आप इसका format भी बना के बता सकते हो. Frequently use करती है because उसकी memory क्यों use करती है, क्या होता है और कैसे helpful है basically. Travel guide क्या होता है, weekly travel guide भी होती है, publish होती है newspaper में, उससे उसे सारी information मिलती है by air, by road, by rail की. Internal telephone directory extremely important है. इसमें क्या होता है, list of extension numbers, names of all the employees arranged alphabetically. The receptionist uses it frequently. दो नंबर का इतना लिखना है कि 2 marks का justification आप दे सकें. Okay. Now moving to option 2, like I said, if you have done option 1, you don't need to go to option 2. But for those who haven't done option 1, we will come to option 2. What are the things to be kept in mind while writing a report of an accident? You can see it is such a big question. 6 mark का question है. So you have to write elaborately. आप चाहो तो ये points लिखकर इनको थोड़ा और explain भी कर सकते हो. So get to the point immediately. Don't talk about the things that led to the things which are not necessary, which are not important. So just come to the point and write the important points that are related to the accident only. Now write, second point is detail of the injury. What are the physical causes? What are the physical injury cause? What are the human injury cause? What is the material injury? What kind of loss has occurred? What things have been destroyed? Any other loss that has happened in the accident? Mention all the details. What was the cause of the accident? Cause of the accident is very important. And इसमें details of injury is also important when you're seeking an insurance claim. Cause of accident बताना बहुत ज़रूरी है. Then you show recommendations कि क्या क्या किया जा सकता है. So like I said, write it down like points and explain them in your own words. If you've written it like this, you will surely get a 5 mark. Now this is a very silly marking that has been given. 1 mark का question और आपसे कहा है कि tips क्या दोगे face to face interview के लिए. तो आप सिर्फ पॉइंट्स में लिख दो, स्टडी द कंपनी, नो अबाउट द कंपनी, स्टडी योर सेल्फ, प्रिपेयर अ CV, प्लान योर अपीयरेंस, डोंट बी सो कैजुअल, प्लान योर टाइम, रीच द इंटरव्यू डेस्टिनेशन हाफ एन आवर प्रायर एंड स्टडी इट प्रॉपरली. सो 1 mark के लिए इतना काफ़ी है. नाउ डिसाइड वेदर दे आर फॉर्मल इनफॉर्मल. सरन्या मीट जैन, तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा. लेट मी इंट्रोड्यूस, फॉर्मल हो गया. By the way, how do you know each other? Informal है. Hi, how are you? It can actually be formal as well as informal, but I have written it informal क्योंकि hi जो है वो informal. Okay, now moving forward to email writing.
You are the zonal manager of Saini Enterprises Amritsar. Write an email to all the branch managers of your zone that there will be a meeting regarding opening a new branch in Haryana on 25th November 2019. Now, when you're writing an email, you have to mention the subjects सबसे पहले. So you write urgent or non-urgent. तो जब non-urgent है तो we will not write anything only. Urgent के लिए we'll write urgent. Urgent, write urgent and then put a dash or colon whatever. Then meeting regarding new branch in Haryana. ये हो गया subject line. फिर आप क्योंकि सारे HR मैनेजर्स को लिख रहे हो तो डियर ऑल कर दोगे, ग्रीटिंग लाइन लिखोगे, greetings to everyone. Then briefly you will get to the point by saying that it is to inform all of you that there is a meeting to be held on 25th November 2019 at 10 a.m. Then you will mention the other details, कहाँ पर होगी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से होगी, Zoom link ये मैं share कर रहा हूँ, या फिर there is a place or you have booked a hotel, all the staff must reach at 10 a.m. in the cafeteria or in the conference hall. क्या क्या details हैं meeting की that you will write in the email. But again, it does not have to be very lengthy, very short, very brief. Finally, आप regards, comma या warm regards, comma नीचे zonal manager, Saini Enterprises Amritsar branch. ठीक है, तो it becomes self-explanatory. Now last question. You are Sheenu or Shreya living in 4 Jeevan Street, Kamla Nagar, Chennai. Write an application for the post of sales executive in JJ Enterprises, Chennai. So how you start off is sender's address you write. So you'll write 4 Jeevan Street. In the next line you will write Kamla Nagar. In the next line you'll write Chennai. Then you will write the date of examination of course. Receiver's address is, you will write HR manager या सिर्फ manager. Then you will write JJ Enterprises, Chennai. Done. Subject, applying for the post of sales executive. Sir, dear sir भी लिख सकते हो. Body para 1, you will say request for application की I am hereby applying for this job of a sales executive in your organization. I found it in so and so column of the newspaper so and so, dated so and so. Then you will leave it at that. Then you will move on to body para 2. Body para 2 में you will talk about your education and your experience, with experience first, जिसमें आप experience latest पहले बताएंगे, and then you will come to the education, and you will also say that the resume is attached here with the application. Body para 3 में आप बताएंगे call to action, that I will be eagerly waiting for your favorable response, or a favorable response will be highly appreciated, and so on, or looking forward to an early response from your end. And finally you will end by saying yours faithfully and then your name. So you will write Sheenu या फिर Shreya based on your gender, and that's all. I hope this video is helpful for you. I wish you all the very best for your exam. Bye bye. Keep watching. Do like, subscribe and share my channel. Take care.